Welcome back, guys. I'm cutting your work, power, and energy. Question 12, paper 2, 5054. Let's start. Part A. Some sources of energy used to produce electricity may run out in the future, which are the non-renewable energies. Underline the two sources of energy that are likely to run out first before the others. अच्छा इसमें हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं जो राइट आंसर है उसको छोड़ देते हैं उसके अलावा रॉन्ग आंसर्स को हाईलाइट कर लेते हैं विंड विंड विल स्टे एज लॉन्ग एज द अर्थ इज हियर हवा तो चलती रहेगी हवा विल नॉट स्टॉप हवा विल नॉट रन आउट राइट सो या वेव्स वेव्स विल नॉट इवन आउट ईदर अभी तो ज्यादा ही हो रही है क्योंकि लाइक लॉट ऑफ सुनामीज वगैरह हो रहे हैं एंड देन टाइड्स they will not run out either solar will not run out anytime soon because like the sun it will stay there for billions and billions of years, right? So no, not solar either. While on the other hand, coal, जो अर्थ के अंदर कोल है, it will eventually run out, right? Because अगर हम इसको यूज करते रहे इससे it is not a infinite source. I'm not saying sun is an infinite source either, but billions of years is like infinite for us as a civilization, right? Billions and billions of years. sun की solar energy is not only sun's energy, कोई और स्टार की हो सकती है जिससे हम सोलर एनर्जी ले सकते हैं लेकिन कोल जो है इट इज लिमिटेड ऑन अर्थ और ये खत्म हो जाएगा eventually and so will oil will run out as well after a certain amount of time because we can't just keep producing oil at this pace and because दुनिया की consumption जो है it is increasing by the day oil will run out eventually. Figure 2.1 is simplified diagram of a geothermal power station. Geothermal power station है. Thermal energy is given to the water as it passes through rocks underground. Describe the process by which this thermal energy causes the turbine to turn. अच्छा भला क्या होता है वाटर वाटर डाला है और उसको गर्म किया गया वाटर गर्म होता है देखिए इधर से कूलिंग टावर वाटर डाला गया है वाटर इंसर्ट किया गया है उसके बाद वाटर गुजरते गुजरते बिकॉज ऑफ द हीट the water turns into steam and then steam comes here and goes into the turbine and the turbine turns and there is a generator there and जो generator होता है ना generator से electricity produce होके it goes into the power station वगैरह वगैरह right so that is the process अभी मैं एक दफा simplified version में बता देता हूँ water here water गर्म होता है water गर्म होके heat में होता है heat heat due to the differences in pressure वो टरबाइन को मूव करती है when turbine moves electricity is produced and when electricity is produced आपके घरों में आती है electricity so that is one of the ways electricity is produced using that so this is the right answer water boils turns into steam pressure force of steam turns turbine steam at high pressure differences across turbine like I said 13. A small coin of mass m is initially at rest. It is dropped from a height h above ground level. The coin has a speed v as it hits the ground. अच्छा शुरू में उन्होंने बोला है कि इट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ h मतलब शुरू में उसके पास एक हाइट थी एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज हाइट इट ऑटोमेटिकली हैज ग्रेविटेशनल एनर्जी बिकॉज एक ऑब्जेक्ट का ना ही मास चेंज होता है ना ही उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिफर करती है द ओनली थिंग विच इज चेंजिंग इज हाइट तुम एक ऑब्जेक्ट को ऊंचा रख सकते हो नीचे रख सकते हो बट यू कैन नॉट change its mass or you cannot change its gravitational potential energy in an ideal situation right और जैसे जैसे वो नीचे गिरता जाता है all the gravitational potential energy has been turned into kinetic energy because जब आप एक चीज को नीचे ड्रॉप करते हो it will accelerate and when it accelerates it gains velocity और जब ये velocity gain करती है then kinetic energy आ जाती है kinetic energy is induced because kinetic energy is also dependent on one thing which is speed जितनी स्पीड होगी उतनी ज्यादा kinetic energy होगी
अच्छा ये हो गया. Sorry, I forgot to do the question. Gravitational field strength is equals to G. State an expression for gravitational potential energy of the coin at height h. Above ground level, gravitational potential energy will be m. उन्होंने mass में दिया है m, and we have the value of g, which is g, or v, mgh, sorry, h. So those are the three things they have given us, और उसको हमने as it is लिख दिया है. We just have to find out what an expression, state an expression बोला उन्होंने. They didn't say कि values use करनी है, just an expression. फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर. So that is the formula of kinetic energy. Very easy. You don't have to write the formula. Remember, आपने formula नहीं लिखना. They have given us specific letters that we have to use, and we have to use it in the correct order. B. The coin is dropped from the top of a building of height 380 meters. Determine the speed of the coin as it hits the ground. You may ignore air resistance. अच्छा, अब हमें क्या है? हमारे पास है height, which is used. अच्छा, height. अभी मैंने आपको क्या बताया था? When the object is at top, it has gravitational potential energy only because the object is not moving. But as it moves down, it will gain kinetic energy. And when it gains kinetic energy, it will have the same amount of kinetic energy as it had the same amount of gravitational potential energy. जितनी यहाँ gravitational potential energy थी ना, for example 50 joules की gravitational potential energy थी, यहाँ जाके 50 joules of gravitational potential energy will turn into 50 joules of kinetic energy. So hypothetically, mgh is equals to 1 by 2 mv square, right? Mass कितना है? Mass हमारे पास given ही है. m g कितना है? Into 10. G is 10 and it will stay 10 on earth. और उसके बाद h कितना है? 380. And we have to find the mass. I mean not the mass, the speed. So 1 by 2 into m into v, which we have to find v square. ठीक है ना? m यहाँ भी है. अगर m यहाँ डिवाइड होगा तो m से कट जाएगा. राइट? ये तो बेसिक मैथ के रूल है, आपको आने चाहिए. m से कट जाएगा. राइट? So we will be left with 3800 is equals to 1 by 2 v square. अच्छा 1 by 2 यहाँ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जो यहाँ आई मीन 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है ना, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. दैट विल गिव अस, माय बैड, दैट विल गिव अस 3800 into 2, which is 7600. 7600 is equals to v square. तो अगर हम इसको अंडर रूट ले ले, 78,600 का अंडर रूट विल बी 87.17. मतलब 87 ही हो जाएगा. v is equals to 87 meters per second. So that is the right answer. Yes. So when air resistance is negligible, a heavier coin hits the ground at the same speed as the lighter coin when they are both dropped from the same height. Explain why. Because when there is no gravitational, जब g change ही नहीं हो रहा, the acceleration will stay the same. And when the acceleration stays the same, then they will accelerate at the same amount of time. अगर इस situation में they are saying कि air resistance negligible है, अगर इस situation में हम एक feather भी फेंके ना, एक feather को भी हम फेंके from a height, और एक coin को हम दोनों को same height से फेंके, they will reach the ground at the same amount of time because feather को upward force लग रहा होता है, which is air resistance, लेकिन coin को इतना air resistance नहीं लग रहा होता. So that is the answer. Yes. When air resistance acts
Coins on different masses do not hit the ground at the same time. Explain. अच्छा एक्सप्लेन करना है। अच्छा, अब एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है, ठीक है ना? अब एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है, तो एयर रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन सर्टेन फैक्टर्स। जो सर्टेन फैक्टर होते हैं, इट्स द mass and the सरफेस एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा एयर रेजिस्टेंस लगेगी। आपने देखा होगा पैराशूटिस्ट वेयर द व्हाट डू यू कॉल इट, द पैराशूट्स, सॉरी, द पैराशूटिस्ट वेयर पैराशूट्स, बिकॉज द पैराशूट का surface area it is exponentially larger than that of the man. So yeah, C2 air resistance with my bad, मैंने लगता है गलत आंसर लिखती है। I didn't read that, I just gave you my explanation. अच्छा, C1 क्या है? Both GP and kinetic energy are proportional to mass and cancel out the okay. Anyways, so yeah, acceleration of heavier coin greater, less affected by air resistance. This is gonna be less affected by the air resistance because the force, the G force, the gravitational force, which is being induced onto the heavier object will be much larger than that of the smaller object. So that is it for the video. I hope you enjoyed. Thank you for watching. Allah Hafiz.